Good morning, sir. Good morning, everyone. Beta. Good morning, sir. Good morning, Good beta. morning, sir. Good morning, everyone. Good morning. Morning, sir. Good morning, beta. चलो, आज we'll start with the basal nuclei. कल हम लोगों ने इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा की थी, basal nuclei, और इसमें जो corpus striatum है, ये कई बार पूछा गया. It's an important thing because it's one of the main nucleus for the extrapyramidal system. और वो हमारे skeletal muscle movements को भी कंट्रोल करता है. तो इसलिए इसको कॉर्पस स्ट्राइटम, अगेन हम फिर आपको बताते, कॉर्पस स्ट्राइटम इज रिलेटेड टू द, इट्स अ पार्ट ऑफ द बेसल न्यूक्लियाई. कॉर्पस कैलोसम वो दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स को आपस में कनेक्ट करता है, एंड दैट इज अ कॉमिशरल फाइबर. ध्यान रखिएगा, अगर ये आता है तो उसी हिसाब से यू आंसर. चलो, बेसल न्यूक्लियाई. Basal nuclei, basal nuclei are subcortical nuclei, subcortical nuclei lying deep in each cerebral hemisphere, lying deep in each cerebral hemisphere. Full stop. They are so named, because they develop in the basal part of cerebral hemisphere. Full stop. इसलिए इनका नाम पड़ा, because they are found in the basal part of the cerebral hemisphere. They lie deep to the cortex, and they are named as basal nuclei. They form an important part of the extrapyramidal system अब एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम क्या होता है? आपको पिरामिडल सिस्टम मालूम है? Now, pyramidal system are those corticospinal fibers or tracts which form the pyramid in the anterior part of medulla oblongata, and they cross each other and they cross to the opposite side. ठीक है, याद है? Now that was the pyramidal system. This is the extra pyramidal system, yani another system which is not along with the pyramids. So that forms the extra pyramidal system.
The basal nuclei, the basal nuclei include the following. Include the following. Number one, corpus striatum. Corpus striatum. Number two, amygdaloid body. Amygdaloid body. AMYGDALOID. Amygdaloid body. Number three, claustrum. 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 तो पहला लिख लीजिए कॉर्पस स्ट्राइटम. कॉर्पस स्ट्राइटम के बारे में लिख लीजिए पहले, और यही ज्यादा पूछा जाता है बेसल न्यूक्लियस में. व्हेन वी टॉक अबाउट बेसल न्यूक्लियाई, कॉर्पस स्ट्राइटम कई बार पूछा जा चुका है. कॉर्पस स्ट्राइटम is partly divided by the internal capsule into two nuclei. दो न्यूक्लियाई में डिवाइड कर देता है. टू न्यूक्लियाई which are number one, caudate nucleus. Caudate nucleus. CAUDATE. Caudate nucleus. Number two, lentiform nucleus. LENTIFORM. Lentiform nucleus. These two nuclei are interconnected by a few bands of gray matter, giving a striate appearance. STRIATE. Giving a striate appearance. And hence they are termed as corpus striatum. और कौन सी आपको एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर मालूम है विच इज स्ट्राइएटेड? और कौन सा
सर मसल्स होती है सर, स्ट्राइटेड मसल्स हार्ट में। ओके, कहाँ पे होती है चित्ररंजन, कहाँ पे होती है स्ट्राइटेड मसल्स? सब हार्ट में वही थी, स्ट्राइटेड अनस्ट्राइटेड मसल्स। अच्छा चित्ररंजन, अब आप शांत रहो। और कोई बताओ, और कोई बताइए। सर वॉलेंट्री मसल्स होती हैं स्ट्राइकेड। ओके जय, और कोई बताओ। Are striated. है सचिन? Sir, voluntary muscles are striated muscles. एनीवन एल्स? सर हार्ट में जो मसल्स पाई जाती कार्डियक मसल्स में स्टाइलेशंस पाते हैं। ओके, और कोई? Sir, skeletal muscles have also striated muscles, striated tissues. हाँ, when we talk about जो मस्कुलेचर होता है, when we talk about, हम आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कभी आप कॉर्पस कैलोसम और कॉर्पस स्ट्रैटम में कभी मिक्सअप ना हो जाएं। ये इट गिव्स अ स्ट्राइटेड अपीयरेंस। जो पहला हम लोगों ने स्ट्राइटेड स्ट्रक्चर पढ़ा था, दोज वर द स्ट्राइटेड मसल्स और वॉलंटरी मसल्स। ठीक है ना? तो जब आप कभी मसल्स को रिवाइज करें और आप स्ट्राइटेड मसल्स पढ़ें, प्लीज लिंक दैट टर्म विथ कॉर्पस स्ट्राइटम। इन दोनों को लिंक कर लीजिए। देखिए अभी आगे जाके उसका लिंकेज भी पता लगेगा आपको। वाई आई एम ट्राइंग टू टेल यू, ताकि आप कभी भूलें ना इसको। ओके, ध्यान रखिएगा। और जो हार्ट वाले आप कह रहे हैं, दोज आर कार्डियक मसल्स विच विच जिनके जो जो फाइबर्स होते हैं, दे गिव अ स्ट्राइटेड अपीयरेंस। ओके, I expected the whole class to answer immediately. खटाखट खटाखट खटाखट, rather than think यही तो सारी मसल्स आपको सारे जीवन, इन्हीं मसल से तो आपको काम होगा, स्ट्राइटेड मसल से या वॉलेंट्री मसल से। तो ये टर्म्स याद रखिए बेटा आप लोग। चलिए नेक्स्ट, इसी में कंटिन्यू कर लीजिए। फुल स्टॉप। द लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, the lentiform nucleus is divided into a lateral part known as putamen, 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 and a medial part known as globus pallidus. Globus pallidus. First up, the caudate nucleus, and the putamen are together known as striatum, while globus pallidus is also known as pallidum.
PALLIDUM। तो जो स्ट्राइटम बनता है, जो 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 ग्रे मैटर के जो थोड़े बैंड्स हैं जो कनेक्ट करते हैं, वो दे कनेक्ट द कॉर्डेट न्यूक्लियस and putamen, which is the lateral part of lentiform nucleus. Next line. Corpus striatum. Corpus striatum comprises of a caudate nucleus, B lentiform nucleus. अब हेडिंग डाल दीजिए कॉर्डेट न्यूक्लियस। कॉर्डेट न्यूक्लियस, इसका एक मैंने आपको डायग्राम भेजा था, बहुत सिंपल है। इट्स अ कॉमा और सी शेप्ड न्यूक्लियस, जिसके 3 पार्ट्स होते हैं, हेड, बॉडी एंड टेल। और इसके टेल पे एक और बेसल न्यूक्लियस है known as the amygdaloid body. वो डायग्राम में बहुत, इट्स अ वेरी सिंपल डायग्राम which you can see. तो वो जगह छोड़ दीजिए फॉर द डायग्राम, लिख लीजिए caudate nucleus. It is a highly curved, curved. It is a highly curved C-shaped or comma-shaped band of gray matter. Band of gray matter. Full stop. The concavity of caudate nucleus. The concavity of the caudate nucleus encloses the thalamus and the internal capsule. Full stop. This concavity projects into the lateral ventricle. Next line. The caudate nucleus has a head, a body, and a tail. It has a head, a body, and a tail. Number 1, the head forms the floor of
anterior horn of lateral ventricle and the medial wall of and the medial wall of the anterior limb of internal capsule. Full stop. It is connected to putamen. It is connected to putamen of lentiform nucleus. Number 2, body forms the floor of the central part of lateral ventricle. Number 3, the tail forms the roof. The tail forms the roof of the inferior horn of lateral ventricle and ends by joining the amygdaloid body at the temporal pole. Then lentiform nucleus. सर एक बार रिपीट कर दीजिए टेम्पोरल Temporal pole. POLE. Temporal pole. The number 2, lentiform nucleus. इसका भी डायग्राम आपको भेजा. इट्स सो सिंपल. ये एक बाइकॉन्वेक्स लेंस की तरह दिखता है, बट इसको कोरोनल सेक्शन में या हॉरिजॉन्टल सेक्शन में अगर देखें तो इट अपीयर्स टू बी ट्रायंगुलर इन अपीयरेंस. और ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है बाय अ थिन लैमिना ऑफ व्हाइट मैटर. जो मीडियल स्मॉलर पार्ट है दैट इज ग्लोबस पैलिडस, और जो लार्जर lateral part hai, that is the putamen, and this putamen is connected to the head of caudate nucleus to form the striatum. लिख लीजिए lentiform nucleus. डायग्राम के लिए जगह बात छोड़ दीजिएगा. It is shaped like a biconvex lens. First up, it is triangular in both coronal and horizontal sections. It forms the lateral boundary of internal capsule full stop,
It is divided into two parts. It is divided into two parts by a thin lamella by a thin lamella of white matter. A putamen. A putamen. It is the outer. It is the outer, larger, lateral part and is dark in color and roughly 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 quadrangular in shape. Quadrangular in shape. Quadrangular. Quadrangular in shape. First stop. Structurally, it is similar to caudate nucleus. Structurally, it is similar to caudate nucleus. B. Globus pallidus. It is the smaller medial part comma, triangular in shape and pale, P-A-L-E, pale in appearance. Then amygdaloid body. Amygdaloid body. It is a spherical mass. It is a spherical mass of gray matter located in the roof of the inferior horn of lateral ventricle. It is a composite structure containing a number of nuclei full stop, fibers of olfactory tract terminate here full stop. The functional importance of these nuclei is not clearly known but lesions of
amygdaloid body may affect sexual behavior as it belongs to the limbic system, as it belongs to the limbic system. Then claustrum. It is a thin sheet of gray matter. It is a thin sheet of gray matter the significance of which is not known. Then blood supply. Caudate nucleus and putamen. Caudate nucleus and putamen are supplied by lateral and medial striated branches of anterior, middle, and posterior cerebral arteries. Next line. Globus pallidus is supplied by choroidal artery. Amygdaloid body is supplied by anterior choroidal artery and posterior communicating artery. ये सारी आर्टरीज अभी जब हम लोग देखेंगे the supply at the base of brain, the formation of circle of Willis, ये सारी आर्टरीज आपको दिखाई देंगी in that diagram. Next, connections of corpus striatum. The corpus striatum is regarded as one of the fundamental nucleus of the forebrain. Comma, taking part in unconscious and automatic control of the nervous system.
and through them it controls the striated musculature or skeletal muscles. आई होप अब आपको जो लिंक हम आपको शुरू में बताने की कोशिश कर रहे थे, अब आपको वो लिंक समझ आ गया होगा. Striated muscles, corpus striatum, which controls the actions of striated muscles. I hope अब ये आप कभी नहीं भूलेंगे. कॉर्पस स्ट्राइटम क्या होता है? स्ट्राइटेड मसल से रिलेटेड होता है. याद रहेगा होपफुली. चलिए, full stop. It does not function as a separate motor system, but always works in association with other systems. Full stop. Corpus striatum together with red nucleus and substantia nigra form the extrapyramidal system. Okay, कभी कभी वाइवा में पूछ लेते हैं, what are the parts of the extrapyramidal system? Corpus striatum, red nucleus, and substantia nigra. Next line. The striatum bracket में caudate nucleus plus putamen, caudate nucleus plus putamen is regarded as an input center. And globus pallidus is regarded as an output center. तो इनके कनेक्शंस बता दें आपको कौन कौन से ट्रैक्स आफ्रेंट एंड इफरेंट कनेक्शंस इनके. तो पेज को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए. एक में फर्स्ट में लिख दीजिए न्यूक्लियस, सेकंड में आफ्रेंट और तीसरे में इफरेंट. पहला न्यूक्लियस लिख लीजिए. Caudate nucleus and putamen. Caudate nucleus
and putamen. afferent में लिख लीजिए, afferent में from number 1 cerebral cortex, number 2 thalamus, number 3 substantia nigra, then efferent में लिख लीजिए, number 1 2 globus pallidus, number 2 also 2 substantia nigra and thalamus. Then next, globus pallidus, afferent, mainly from caudate nucleus and putamen, mainly from caudate nucleus and putamen, also from number 1 thalamus, number 2 substantia nigra, number 3 subthalamic nucleus, then efferents from thalamus, hypothalamus, subthalamus, subthalamus, red nucleus, olivary nucleus, substantia nigra, reticular formation. तो ये इसके कनेक्शंस हैं. इसमें striatum is regarded as an input center and pallidum या globus pallidus is regarded as an output center. तो इसमें efferents बहुत सारे. efferents एक बार रिपीट कर दीजिएगा. efferent सारे या कहाँ से? या सर थैलेमस से. Thalamus, number 2 hypothalamus, subthalamus, number 4 red nucleus, number 5 olivary nucleus, number 6 substantia nigra, number 7 reticular formation. Then functions of corpus striatum. Number 1, integration of involuntary movements associated with
associated with postural adjustments, postural adjustments, and emotional reactions, and emotional reactions. Number two, it is involved in it is involved in complex complex aspects of motor control, including motor planning, and initiation, motor planning and initiation of movement. INITIATION. Initiation of movement, comma, smooth voluntary actions, smooth voluntary actions, and regulation of muscle tone, and regulation of muscle tone. Number three, it controls the extra pyramidal activities. It controls the extra pyramidal activities of the body, comma, influencing the pre-central motor cortex, influencing the pre-central motor cortex, which is also the site for motor area, which is also known as the motor area. Then applied anatomy. Applied anatomy. Number one, the lesions of basal ganglion do not cause paralysis, rather paralytic lesions कर दीजिए, paralysis कीजिए, do not cause paralytic lesions, but produce abnormal movements and postures, or changes of tone, or changes of tone. Number two, lesions of corpus striatum. Lesions of corpus striatum lead to
lead to Parkinsonism. Lead to Parkinsonism. आप में से कोई बताएगा ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कि अगर lesions of caudate of corpus striatum may lead to Parkinsonism? सोचो, आंसर आपके पास है। और अभी आपको उससे रिलेटेड कुछ चीज बताई थी आपको। नहीं, एडजस्टमेंट की वजह से हो सकता है। हाँ बताइए अजीत। सर पोस्चरल एडजस्टमेंट बिगड़ जाता है तो पार्किंसन नहीं, डिजीज। मगर क्यों 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 व्हाई इज द आंसर इज व्हाई। सर बिकॉज कॉर्पस स्ट्रिएटेड मसल्स को कंट्रोल करती है, उसकी वजह से मूवमेंट इफेक्ट होता है। नहीं, पार्किंसनिज्म क्यों हो जाए? सर सब्सटेंशिया नागरा सर उसका पार्ट है तो हाँ देखिए, आपको पता था जब हम लोग सब्सटेंशिया नाइग्रा पढ़ रहे थे कि अगर, और वो सिंथेसाइज करता है डोपामीन, डोपामीन की कमी की वजह से होता है पार्किंसनिज्म। और सब्सटेंशिया नाइग्रा इज अ पार्ट ऑफ द एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम जिसका कॉर्पस स्ट्राइटम भी पार्ट है। तो जब लीजन्स इसके होंगे तो इट वुड अफेक्ट द dopamine synthesis also. That in turn will lead to Parkinsonism. Then number 3, disease of caudate nucleus. Disease of caudate nucleus results in chorea, 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 which is characterized by quasi QUASI, quasi purpose involuntary repetitive REPETIVE repetitive movements. ये जो कोरिफॉर्म मूवमेंट्स होते हैं ना, आप देखेंगे, आप जब कभी न्यूरोलॉजी में जाएंगे तो यू विल गेट दिस। ये क्या होगा, आप देखेंगे कि कोई बैठा हुआ है और यूं 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 बार बार करेगा। क्वाजी मीन्स सेमी और फॉल्स, कोई पर्पस नहीं होता क्यों कर रहा है, नहीं। जैसे हम एक मूवमेंट करते हैं तो उसका एक वजह, एक पर्पस होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है। इसमें क्या होता है कि आप बैठे बैठे देख रहे हैं और वो यूं यूं ये मूवमेंट करे जा रहा है, ये मूवमेंट कर, या ये मूवमेंट करे जा रहा। सी रेपिटेटिव इनवॉलंटरी, वो खुद नहीं कर पा रहा बिकॉज ऑफ द लीजन्स ऑफ द कॉर्डेट न्यूक्लियस, ये अपने आप हो रहा है। आप देखेंगे, आई एम श्योर पिक्चर्स में अक्सर देखते हैं, ये कर रहे हैं, या यूं कर रहे हैं, या ये कर रहे हैं। सी रेपिटेटिव मूवमेंट है जिसका कोई वजह नहीं है और जिसका कंट्रोल उस पेशेंट के ऊपर के पास नहीं है। सो दीज आर क्वाजी पर्पसिव इनवॉलंटरी रेपिटेटिव मूवमेंट, रिपीट कर रहा, बार बार उसी एक्शन को बार बार कर रहा। एंड दिस हम लोग ने, आई मीन आई हैव सीन सम पेशेंट्स विद कोरिया। अब जब मेडिसिन में आपको हो सकता है रोमैटिक कोरिया आपको पढ़ाएं कभी, बट दीज आर कोरिफॉर्म मूवमेंट्स, इसको हम लोग कहते हैं। दीज आर कॉल्ड एज कोरिफॉर्म मूवमेंट्स, क्वाजी purposive involuntary repetitive movement.
Then number 4, athetosis. 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 It is a form of movement which is slow and repetitive. Slow and repetitive, caused by lesion of putamen. Caused by lesions of putamen. It's a slow, repetitive movement. I think इसको एक और टर्म से जाना जाता है, सेंट विटस डांस. मुझे याद नहीं आ रहा, but I think it's also called as the Saint Vitus dance. VITUS. इसमें धीरे धीरे एक मूवमेंट करते जा रहे हैं, रेपिटेटिव मूवमेंट है, धीरे धीरे करते रहो, लाइक अ डांस मूवमेंट. So this was about corpus striatum. अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता on corpus striatum, तो पहले आप बताइए what is corpus striatum. Briefly, you can write about the caudate and lentiform nuclei. Then you talk about the connections of corpus striatum, and then the applied anatomy. Then we come to the arterial supply of cerebrum. जब आर्टीरियल सप्लाई में यहाँ पे दो टाइप के सिस्टम्स होते हैं, विच सप्लाई द सेरेब्रम. आपको पहला एक डायग्राम अगर आपके पास है तो देखिएगा, इसमें दो सिस्टम्स, एक है वर्टिब्रल आर्टरी सिस्टम और दूसरा होता है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी सिस्टम. दो होते हैं. आपको याद होगा जब हम वर्टिब्री दिखा रहे थे, आपको डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे, तो सर्वाइकल वर्टिब्री के ट्रांसवर्स प्रोसेस में एक फोरामेन था. सर्वाइकल वर्टिब्री के ट्रांसवर्स प्रोसेस में एक छोटा सा फोरामेन था. दैट वाज कॉल्ड एज फोरामेन ट्रांसवर्सोरियम. उसमें से दोनों साइड से वर्टिब्रल आर्टरी असेंड करती है, ठीक. एंड एट द बेस ऑफ पॉन्स ये दोनों आर्टरीज यूनाइट करके देन दे फॉर्म अ सिंगल बेसिलर आर्टरी which is lodged in the basilar sulcus on the ventral surface of pons. तो वो दो आर्टरीज असेंड करें इस तरीके से, वर्टिब्रल आर्टरी, they unite and form a single basilar artery. Now, this basilar artery at the base of brain, it divides into two. Right and left posterior cerebral arteries. तो आप डायग्राम देख रहे होंगे, तो दो वर्टिब्रल आर्टरीज, they unite, they form a single बेसिलर आर्टरी. ये बेसिलर आर्टरी बेस ऑफ ब्रेन में दो ब्रांचेस में डिवाइड कर दी, राइट एंड लेफ्ट पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरीज. ओके. ना इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो होती है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी gives the anterior cerebral artery, the middle cerebral artery, the posterior communicating artery and the anterior choroidal artery. ये भी बहुत क्लियरली इंडिकेटेड है आपके डायग्राम्स में. थोड़ा सा डायग्राम को ध्यान से बनाइएगा, बहुत आसान है. अनफॉर्चुनेटली आपको वहाँ पे बनवाता बोर्ड पे,
तो आप साथ साथ मेरे बना लेते हैं। बहुत बहुत सिंपल है। स्टार्ट करिएगा, जब आप उस डायग्राम को बनाए सर्कुलर विलेज के, तो उसको स्टार्ट करिएगा नीचे से। वर्टिब्रल आर्टरी, द टू वर्टिब्रल आर्टरी, बेसलर आर्टरी और टू पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरीज। ठीक, फिर यहां से लीजिएगा दोनों साइड से मिडिल सेरेब्रल आर्टरीज, internal carotid artery. Internal carotid artery, anteriorly it gives the anterior cerebral arteries, which are again joined to each other by the anterior communicating artery. Or there is a posterior communicating branch from the middle cerebral artery which joins the posterior cerebral artery. तो वो सर्कल बन जाता है। चलिए, आई होप आप आराम से बना लेंगे डायग्राम को। बहुत सिंपल डायग्राम। तो इसमें दो सिस्टम्स होते हैं आर्टेरियल सप्लाई ऑफ सेरेब्रम में। वन इज द वर्टिब्रल आर्टरी सिस्टम, दूसरा होता है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी सिस्टम। तो लिख लीजिए इसके बारे में। आर्टेरियल सप्लाई ऑफ सेरेब्रम। There are two arterial systems. There are two arterial systems which supply the cerebrum. And the arteries supplying the cerebrum and the arteries supplying the cerebrum belong to them. The two arterial systems are number one, the vertebral arterial system. The vertebral arterial system. Two, internal carotid artery system. Internal carotid artery system. Carotid की spelling है CAROTID. Internal carotid artery system. एक वर्टिब्रल आर्टेरियल सिस्टम आपको बताए का डायग्राम भेजा, उसको देख लीजिए और लिख लीजिए इसके बारे में। हेडिंग डाल दीजिए, वर्टिब्रल आर्टेरियल सिस्टम। वर्टिब्रल आर्टेरियल सिस्टम। The vertebral arterial system consists of a pair of vertebral arteries full stop. Each vertebral artery is a branch of subclavian artery. Is a branch of subclavian artery. अच्छा, सबक्लेवियन आर्टरी से कोई और आर्टरी याद आती है आपको? सबक्लेवियन आर्टरी से एक्सिलरी आर्टरी। कौन सी? एक्सिलरी आर्टरी। ओके, हाँ, because axillary artery is the continuation of subclavian artery. Good. Full stop.
Each vertebral artery ascends upwards, ASCENDS, ascends upwards from the root of the neck to enter the foramen magnum. Next line. It lies in front of brain stem also. The vertebral arteries of both sides incline medially over the pyramid and unite to form a single basilar artery. Full stop. The basilar artery ascends upwards in the basilar sulcus on the ventral surface of pons. Sir, basilar sulcus. On the ventral surface of pons. Full stop. At the upper border of pons, it terminates by dividing into right and left posterior cerebral arteries. The basilar artery gives 4 sets of branches which from above downwards are superior cerebellar artery, arteries, CEREBELLAR. Number 2, pontine branches. Number 3, labyrinthine branches, LABRYNTHINE, labyrinthine branches. Number 4, anterior
inferior cerebellar artery, anterior inferior cerebellar artery. So this was the vertebral system of, this is the vertebral artery system. Next, internal carotid arterial system. Internal carotid arterial system. It consists of the internal carotid artery. It consists of the internal carotid artery of each side. Of each side. Full stop. Internal carotid artery is one of the terminal branches, of common carotid artery. Next slide. Each carotid artery ascends upwards through the upper half of the neck and traverses TRAVERSES, traverses the carotid canal. Traverse matlab passes across, goes through the carotid canal to ultimately reach the base of brain, to lie below the anterior perforated system and lateral to optic chiasma. Next line. Each internal carotid artery gives the following branches. Number 1, anterior cerebral artery. Anterior cerebral artery. Number 2, middle cerebral artery. Number 3, posterior communicating artery. Number 4, anterior choroidal artery. Anterior choroidal artery.
Then we come to that circle of Willis, also called as circulus arteriosus. It's an arterial circle. It is an arterial circle formed by anterior, middle, and posterior cerebral arteries, posterior communicating artery. ये सब मिलके they form the arterial circle known as circulus arteriosus or circle of Willis. इसका भी एक आपको डायग्राम भेजा है, सिंपल डायग्राम है, बनाइएगा, स्टेजेस में बनाइए तो बहुत आसान है, बहुत आसान. एक सर्कल बनना, बेसिकली इट्स अ सर्कल, एक इस हाफ है, एक इस हाफ है. यहाँ से पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी है, मिडिल सेरेब्रल आर्टरी एंड द एंटीरियर सर्कल, और सब एक दूसरे से ज्वाइंट हो जाते हैं, देन दे विल फॉर्म द सर्कल. जो दो एंटीरियर cerebral arteries हैं, they are joined together or connected by the anterior communicating artery, और middle cerebral artery connect होती है with the posterior cerebral artery through the posterior communicating branch. सर्कल बन गया. इसके बारे में लिख लीजिए, ये पूछा गया, कभी कभी शॉर्ट नोट आता है, इसको भी आ चुका है. तो अब हेडिंग डाल लीजिए और इसको मार्क कर लीजिए एज इम्पोर्टेंट. सर्कुलस आर्टीरियोसस, सर्कुलस आर्टीरियोसस और सर्कल ऑफ विलिस, और सर्कल ऑफ विलिस. अगेन एक हाफ पेज छोड़ दीजिएगा टू मेक दिस डायग्राम. इसके बारे में लिख लीजिए. It is a free, FREE, it is a free anastomotic arterial circle formed at the base of brain. Next line. It is formed by anterior and middle cerebral arteries from the internal carotid artery system, and the posterior cerebral arteries from the vertebral arterial system. This anastomotic circle is known as circle of Willis, WILLIS, circle of Willis, or circulosus arteriosus. Next line. The two anterior
cerebral arteries, the two anterior cerebral arteries are connected by anterior communicating artery. Next slide. The circle is formed by number one, anteriorly by the anterior communicating artery, anteriorly by the anterior communicating artery, number two, posteriorly by the basilar artery as it divides into right and left posterior cerebral arteries. Number three, on each side by anterior cerebral artery, comma, internal carotid artery, comma, posterior communicating artery, and posterior cerebral artery. Next line. The circulus arteriosus attempts attempts to equalize equalize the flow of blood to different parts of brain, and provide a collateral circulation in case of obstruction to any of its components. Then branches. The branches are number one, cortical or external branches, which run on the surface of
cerebrum. Number 2, central branches. Central branches which perforate the white matter to supply thalamus, corpus striatum, and internal capsule. They do not anastomose. They do not anastomose. And if blocked or obstructed, can give rise to large cerebral infarcts. Large cerebral infarcts. INFARCTS. The central branches are arranged in 6 groups. Which are anteromedial, anterolateral, ब्रैकेट में two groups of anterolateral, posterolateral, two groups of posterolateral, and posteromedial. Then blood supply of cerebrum. Number 1, blood supply to superolateral surface is mainly by middle cerebral artery, and partly by anterior and posterior cerebral arteries. Number 2,
middle cerebral artery supplies middle cerebral artery supplies about two-thirds about two-thirds of the superolateral surface and this region includes and this region includes the greater parts of the greater parts of primary motor, comma, primary sensory centers, comma, frontal eye field, frontal eye field, FIELD, comma, Broca's area of speech, and Wernicke's, WERNIEK' area of speech. Number next, anterior cerebral artery supplies the medial part of the orbital surface of frontal lobe of frontal lobe. चलिए आज हम लोग यहाँ तक पढ़ते हैं and then we'll continue on Monday. Monday को we'll have 2 classes, 11 to 1 and 2 to 3. 11 to 1 तो regular class होती है ना हमारी, and then 2 to 3. Tuesday again एक क्लास हो जाएगी 1:30 to 2:30. वेडनेसडे को भी सेम. वेडनेसडे को आपकी क्लास में कब होती है?
1:30 to 3 ना? यस सर। 1:30 to 3। और थर्सडे को हम क्लास लेंगे आपकी। थर्सडे को आपकी क्लास लेंगे 1 से 3। नहीं, अगेन 1:30 से 3, 1:30 to 3 थर्सडे के लिए हमने आपसे कहा था। थर्सडे को क्या टाइम रखा था नवीन? सर 1:30 to 3 कहा था सर आपने। हाँ हाँ, तो थर्सडे को भी क्लास रखी है, तो फिर उसके बाद थोड़ा सा गैप होगा आपकी नहीं सर क्लास 1:30 to 3 नहीं सर 2 to 3 हाँ कहा था सर आपने। थर्सडे को। यस सर 2 to 3 कहा था। तो देख लेते हैं, हम कुछ खत्म करना चाहते हैं तो we'll do it from 2 to 3, 3:30 जितना भी है। उसके आगे आपकी क्लास होती है थर्सडे को 3 बजे से। सर थर्ड नो थर्सडे सर को 3 बजे से सर नर्सिंग होती है और हो इस टाइम हो नहीं रही है सर। आजकल हो नहीं रही है आपकी नर्सिंग की, यस सर तो नहीं हो रही। हम उसको ले लेंगे। अगर नर्सिंग का होगा तो स्टॉप एट 3 o'clock, नहीं तो जो थोड़ा बचेगा आई विल वांट टू एक पार्ट, ये ब्रेन वाला पार्ट पूरा मुझे खत्म करना है, तो आई विल वांट टू फिनिश दिस। तो विल टेक इट, देखते हैं अगर 2 से 3, 3:30 अगर नर्सिंग नहीं होगी तो विल टेक इट। चलो देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ बेटा, और ध्यान रखिएगा अपना आप सब लोग। दीक्षा, दीक्षा भी आप रुके रहिएगा, आप जाइएगा मत प्लीज, मैं अभी Yes, आपसे sir. बात कर रहा हूँ। बस